Reverb. Well, now, as you know, sound is a wave. Sound is a wave. Hence, as you know, sound is a wave. Sound waves also reflect like light waves. Light wave जैसे कोई भी surface में गिरने से reflect करके वापस आता है. Sound waves also gets reflected from obstructions. Now, sound wave gets reflected by bigger obstructions. Why? Because sound wave का size भी बहुत बड़ा होगा. तो इसीलिए obstruction जितना बड़ा होगा उतना अच्छा reflection हम लोगों को सुनाई देगा. Now, in general, in everyday life, हम लोगों को ये रिफ्लेक्शन क्लियरली सुनाई नहीं देता है. उसका एक रीजन है, बट बिफोर वी कम टू इट, जस्ट राइट दिस डाउन. द साउंड वेव्स रिवर्बरेशन, echo and reverberation, BERATION. So sound waves get reflected by obstructions of bigger size. Bigger size. Now listen, concentrate. Sound waves get reflected by obstructions of bigger size, where the reflection of sound obeys the same laws as that of light. लाइट का रिफ्लेक्शन जो लॉज ओबे करता है, साउंड का रिफ्लेक्शन भी सेम लॉज ओबे करता है. ठीक है, कोई डिफरेंट हाँ ना, स्नेल्स लॉ नहीं, वो रिफ्रैक्शन में है, ये रिफ्लेक्शन में है. ठीक है, अरे रिफ्लेक्शन दिख रहा है. रिफ्लेक्शन में स्नेल्स लॉ नहीं आता है. अच्छा, सो द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ओबेज द लॉज एज ऑफ द लाइट. लाइट रे जो ओबेज लाइट रेज जो ओबे करता है, साउंड भी वही लॉ ओबे करता है. नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज, इफ साउंड gets reflected by like the walls of a room or a cliff or edge or big buildings, sound gets reflected from them. Now the question is, why don't we get to listen reflected sound all the time? The reason is, any sound produced and heard by us, heard by human, exists in the brain for 1/10 of a second. ठीक है, so there are some situation differences between monosyllabic, disyllabic, उसके लिए थोड़ा differences है, but for general you can say 1/10 of a second के लिए वो exist करता है हम लोग का brain में. Hence the reflected wave should reach us after 1/10 of 1/10 second, after 1/10 second of the original sound. 1/10 second of the after the original sound. After the original sound for clear identification. ठीक है? Now let the velocity of sound is near about 330 meter per second. 340 yes. Let's keep it at the maximum value. ठीक है? 340 meter per second, and let the distance between source and
the reflector BD, ठीक है। तो मान लो ये सोर्स है और ये रिफ्लेक्टर है जिसके बीच में डिस्टेंस कितना है, तो साउंड वेव जो है वो सोर्स से स्टार्ट करेगा, विल गेट रिफ्लेक्टेड बाय द रिफ्लेक्टर एंड विल कम बैक टू डी। तो ये डिस्टेंस कितना बार ट्रेवल कर रहा है, वो कितना टाइम के अंदर होना चाहिए या उससे ज्यादा, मतलब 1/10 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, तभी क्लियरली हम लोगों को सुनाई देगा। ऑलराइट, सो वी कैन से दैट देयरफॉर v is equal to 2d by t, velocity is equal to, you understand, twice of the distance by time। क्यों twice? क्योंकि एक बार जा रहा है और एक बार वापस आ रहा है। So you can write d as vt by 2, so that is 340 into 1 by 10, that is 17 meters, ठीक है। So only if the distance is greater than equal to 17 meters होता है, then the reflection of the sound can be heard clearly। Sir, Then हाँ बोलो। এখানে একটা জিনিস মেনশন করে the I think best হবে if the sound is traveling through air with velocity this। हाँ সেটা মেনশন করে দিলাম, velocity of sound 340 meter per second। হ্যাঁ মানে যখন নিচে যখন এই স্টেটমেন্টে লিখছো তখন हाँ সেটা নিশ্চয়। Then reflection of sound can be heard clearly। This is called echo, ठीक है। Now ये जो echo है, this echo is used much better way for ultrasonic sounds। Have you heard about ultrasonography? Yes, sir. Of the abdomens? So for identifying any abnormality inside the body which we cannot see from outside, we take the help of ultrasounds। Now you know what is ultrasound? Ultrasonic sound क्या होता है? 2000 हर्ट्ज से ज्यादा। हाँ, 20,000। हाँ, so let's discuss about this a little। Human audibility। Range 20 hertz, 20,000 hertz। इसका मतलब क्या है ना, 20 hertz to 20,000 hertz is the human audibility range। Means below 20 hertz the sound is not audible, and above 20,000 hertz the sound is not audible। Alright, below 20 hertz it is called infrasonic, and above 20,000 hertz is called ultrasonic। भी है ना? हाँ, वो अलग चीज है। हमारे 1 hertz to 20 hertz, right? 1 hertz to 20 hertz হচ্ছে infrasonic। Both the infrasonic and ultrasonic sounds, they are perceptible by some animals, like dogs and cats, they can understand infrasonic sounds। So infrasonic sounds means which are happening at a very low frequency। So that is why dogs can identify any earthquake or tremor before a human can identify, because they can identify below 20 hertz। Alright, above 20,000 hertz is called ultrasonic sound, and most of the animals like bats, dolphins, whales, they use this ultrasonic sound to identify any obstruction in their path। How? Right, even the sonar we use, they use the ultrasonic sound। How? There is a source and there is a receiver। The source creates an ultrasonic sound that goes in all directions, gets reflected from the obstruction and comes back। When the get reflected by obstruction and comes back, that device notes down the time taken by the sound to go and come back। So knowing the time and knowing the velocity, we can calculate the distance of the obstruction।
exactly by the same formula. Exactly by the same formula. So if we find out the distance of obstruction, we can get the warning sign that which direction we might go and we might not. Even the fishermen, they use sonar to identify the fish density regions. कहाँ पर fish ज़्यादा है, कहाँ पर fish कम है. Alright? And sir, why ultrasonic नहीं करना? हाँ? Ultrasonic ही नहीं करना? আল্ট্রাসনিক নাই কেন? তার কারণটা হচ্ছে আল্ট্রাসনিক সাউন্ড don't die out easily. Normal sound, normal audible sound, they die out very easily. But ultrasonic sound don't die out easily. And ultrasonic sound does not deviate. It travels more or less in a straight line. বুঝে গেছো তো? তো সেই জন্য আল্ট্রাসনিক সাউন্ড ইউজ করা হয়. সোনার ইজ হোয়াট? সাউন্ড ন্যাভিগেশন এন্ড রেঞ্জিং. Sound navigation and ranging. It's just a device. Sonar is just a device which is used for people who are inside water generally. Why? Because inside water it is not clearly visible, we cannot see properly, but these sonar devices can picture out the underwater regions very clearly. सर फिल्टर कर देना चाहिए. क्या फिल्टर कर देना. क्या कर देना चाहिए? क्या फिल्टर कर देना चाहिए? सही बात है. समुद्र को फिल्टर करेगा देखने के लिए. अच्छा, now there is another term which you might also have heard of, that is supersonic. Supersonic. So what is the difference between ultrasonic and supersonic? नहीं. वो फ्रीक्वेंसी के वो स्पीड. हाँ, supersonic deals with speed. So what is supersonic? Speed rate of light. Speed of any object. Speed of any object greater than speed of sound. Greater than speed of sound in air. Light, speed of light. ठीक है? Supersonic क्या होता है? Supersonic is speed of any object greater than the speed of sound in air. So there are some aeroplanes which can fly at speed more than the speed of sound. So speed of light. The speed of sound is taken as a unit for them, One and Mach. we call it Mach. So if a fighter jet is flying at a speed of sound, we call Mach 1. If it is flying twice the speed of sound, Mach 2, and so on. Sir, Iron Man suit 7 Mach of दिए तो. ঢপের জিনিস পুরো ঢপের জিনিস বলে দিলা? in real 7-8 Mach অবধি এখন অলরেডি এরোপ্লেন উড়তে পারে. There are some stealth fighters that can fly at a speed of 8 Mach, মানে 8 times the speed of sound. सर मिसाइल हाँ, मिसाइल्स कैन मूव, और उतना जोर से उड़ने से उसका सोनिक बूम भी बहुत जोर का होता है, मतलब इट क्रिएट्स अ ह्यूज साउंड. कॉल इट सोनिक बूम. वेल, this is all about the sound waves. Sound waves से ज्यादा জিনিস জানা ছিল, all the informations. এবারে যেটা